Hello everyone, welcome all of you to the deep dives. So after a long gap, I'll be uploading the new video. So particularly, I'll be discussing about economic geology aspect. Okay, economic geology that is correlated with the stratigraphy. Okay, maybe I'll be uploading in the next video stratigraphic sequence, all those details, individual crater like Dharwar, okay, Basar pattern, right, Singhbom, all those things, all those crater, mobile belt, Ismangarh mobile belt, right, that is correlated with the economic geology, right. Suppose if you look at the Aravalli crater, right, suppose example, right, how I'll be proceeding in the next video. I always prefer to always study the economic geology with stratigraphy, right? Always. Suppose there is a horizon, right? Suppose there is a horizon associated with the gold deposit, okay? Or any type of horizon that is associated with the lead zinc deposit, okay? So stratigraphy takes place a huge role for the formation of the ore deposit, right? Any particular sequence, I mean horizon, is basically important, okay? For ore genesis or understanding the ore deposit formation. Ore deposit formation. Before I will be proceeding economic geology or stratigraphy, whatever maybe the next video, I don't know exactly. So maybe I will be proceeding about individual crater and that is associated with the economic importance, okay? Distribution and economic and distribution and mineral potential of that particular crater, ठीक है. ऐसे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो इकोनॉमिक जियोलॉजी से ओर जेनेसिस then mineral exploration I will proceed, maybe I don't know exactly, but before I'll be discussing about the distribution and geological characteristic with reference to India, कौन सा मिनरल डिपॉजिट कहाँ मिलता है, that is more important. Maybe you will get in the Iit-Jam examination, maybe you get in the GSI, ठीक है. प्री मान लो, मेंस पे तो लिखना होगा, राइट, मिनरल पोटेंशियल और राइट डाउन अबाउट, जैसे मान लो पोर्फरी कॉपर डिपॉजिट खेतरी का, राइट, खेतरी का ओर जेनेसिस और ओर फॉर्मिंग प्रोसेस बताओ, ठीक है, जो भी है ऐसे मेंस में पूछ सकता है. और गेट हो गया, जैसे ही प्रीलिम हो गया, ऐसे सपोज मान लो मैथ्स तो पूछ सकता है. और मे बी यू कैन गेट द टेक्टोनिक एस्पेक्ट, टेक्टोनिक सेटिंग, ठीक है, जैसे मान लो सेटेक्स डिपॉजिट हो गया, ठीक है, सेडिमेंट फॉस्फेट मैसिव सल्फाइड, बीएमएस हो गया, वोल्केनिक मैसिव सल्फाइड हो गया, ठीक है. इसका टेक्टोनिक सेटिंग, टेक्टोनिक इंपोर्टेंस कहाँ है, that is a important question for the Iit-Jam, GET. तो Iit-Jam में ग्रेजुअली क्वेश्चन भी इवॉल्व हो रहा है ना, क्वेश्चन भी इवॉल्व हो रहा है, राइट. सो बिकॉज कंपटीशन इज ह्यूज, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन मे बी यू कैन गेट ट्विस्ट एंड टर्न होके आ सकता है, राइट. सो ये था ऑलमोस्ट. एंड बिफोर आई विल बी प्रोसीडिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एंड जियोलॉजिकल characteristic of individual mineral, so I need your valuable feedback whether you like the video or not. जहाँ पे भी डाउट हो रहा है, you can directly contact deep dives, मेल दिया होगा आपको, directly you can contact. So any doubt you can drop a comment also कि ये समझ में नहीं आ रहा है, so I'll be contacting personally and ask about your doubt, okay, कि क्या समझ में नहीं है. I will definitely
email back, right? So please write a mail or write in the comment section. I need your valuable feedback so that in the upcoming videos I'll be discussing your doubt maybe. Okay, so let's go to the topic. So this is all over the syllabus. So this is Iit-Jam syllabus, this is GET syllabus, and this is GSI pre-syllabus. हर जगह आपको दिखेगा कि मे बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक विथ रेफरेंस टू द इंडिया, नॉट वर्ल्ड वाइड. जैसे मान लो फॉस्फोरिक कॉपर हो गया, राइट, फॉस्फोरिक कॉपर हो गया तो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड वाइड डिपॉजिट विल बी द चिली, राइट, चिली वैली, राइट. सो वर्ल्ड वाइड रेफरेंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट विथ रेफरेंस टू इंडिया व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट metallic and non-metallic. You can get also like coal and oil and gas distribution भी question आएगा definitely. It is also important, but I will more focus on the metallic and non-metallic part, and slightly हम discussion करेंगे coal and oil gas basin wise, right? basin wise discussion करेंगे. Okay, petroliferous basin of India जब पढ़ेंगे तो उसके बाद discussion करेंगे oil and gas, right? So next, if you go to the GET, तो देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल फॉसिल्स इज देयर, न्यूक्लियर फॉइल, ठीक है, जैसे यूरेनियम थोरियम हो गया, ओके, जतुगुड़ा वाटिन, राइट, जतुगुड़ा वाटिन, राइट, मोस्ट प्रोलिफिकस यूरेनियम डिपॉजिट इन सिंघभूम डाटा, ठीक है, सिंघभूम डाटा. तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑलवेज रीड, ऑलवेज स्टडी स्ट्रैटिग्राफी एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी साइमल्टेनियसली. So that you can correlate with the basically distribution and particular horizon or formation, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है. जैसे मान लो पेनिनसुलर ग्नाइसिस में भी इम्पोर्टेंट, और एनी टाइप ऑफ फॉर BIF व्हाट इज द फॉर्मेशन, राइट, where you can get the iron ore deposit, Fe deposit, right? So that is all about the formation and economic aspect, ठीक है. So and this is also GSI pre-syllabus जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर मिनरल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर माइनर मिनरल भी इम्पोर्टेंट है, राइट. क्रिटिकल मिनरल ये तो लेटेस्ट न्यूज एंड जियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, GSI ह्यूज रोल प्ले कर रहे हैं, राइट. क्रिटिकल मिनरल ऑल्सो इम्पोर्टेंट है, ठीक है. एंड ऑलवेज वट एवर आई विल बी डिस्कसिंग इन द वीडियो, प्लीज मेक नोट्स, राइट. नोट्स मेकिंग, जो भी लिख रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, प्लीज मेक नोट सो दैट यू गो टू द होम बैक आफ्टर द वीडियो एंड टू रिवाइज, जस्ट रिवाइज कर लो. 5-10 मिनट लगेगा, जस्ट रिवाइज इट एंड ऑल दोज कॉन्सेप्ट मैप के हिसाब से. एक बार इंडिया मैप देख लो, उसके हिसाब से प्लॉट कर लो. हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसके हिसाब से, राइट. डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो ओके, नेक्स्ट गो टू द सपोज गोल्ड डिपॉजिट मान लो, ठीक है. जैसे मान लो इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ रहे हो, राइट. ठीक है, क्या इंपोर्टेंस है, इंपोर्टेंट क्या है, राइट. फर्स्ट द जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजी इट्स प्रिंसिपल, और डिपॉजिट फॉर्मेशन, राइट, और डिपॉजिट फॉर्मेशन, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है.
डिस्ट्रीब्यूशन विथ रेफरेंस टू द इंडिया, नॉट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। सो ओर फॉर्मिंग प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिपॉजिट प्रोसेस, हाउ दैट गोल्ड डिपॉजिट फॉर्म, राइट। देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ गोल्ड डिपॉजिट। टाइप क्या क्या है गोल्ड डिपॉजिट का? गोल्ड डिपॉजिट टाइप, जैसे मान लो मोस्टली कर्नाटका का जो बेल्ट है धरवार कटन, ओके, लोड गोल्ड डिपॉजिट, लोड गोल्ड डिपॉजिट, आई विल राइट, जस्ट लेट मी add some more pages so that, okay, I can write. मान लो what are the different type of, I will definitely cover the ore deposit formation, right, how the magmatic process happen. I will upload gradually, ठीक है, give me some time, I will definitely upload सीक्वेंस वाइज अपलोड करूँगा, जस्ट वेट। सो बिफोर दैट, टाइप ऑफ गोल्ड डिपॉजिट, ठीक है, जो लिख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, जस्ट मेक नोट्स एंड रिवाइज प्रॉपरली, ठीक है। अभी जस्ट समरी बता रहा हूँ, सो आई विल डिस्कस डेफिनेटली। लोड गोल्ड डिपॉजिट है ना, इट इज मोस्टली इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोड गोल्ड, इसको स्टार मार रखा। So mostly orogenic load gold, orogenic deposit mostly, right? So most of the Dharwar pattern, जो भी गोल्ड मिलता है मोस्टली लोड गोल्ड टाइप डिपॉजिट, orogenic। इसका एज, राइट, हमें से याद रखना। सो आर्कियन और लेट आर्कियन टाइम से अर्ली प्रोटोजोइक, क्योंकि बुक पे अर्लियर कैन, और जस्ट लुक आफ्टर दिस, राइट, जस्ट लुक आफ्टर दिस पर्टिकुलर एज, पर्टिकुलर एज। सो मोस्टली इट इज प्रीक्रेमियन, ठीक है। मोस्ट टोटल रॉक्स, टोटल एरिया, ओके, कवर्ड with rocks of प्रीक्रेमियन एज, ठीक है। उसका होस्ट क्या है टिपिकली? सपोज मान लो, ओके, धरवार का हुट्टी बेल्ट हो गया, ठीक है, धरवार कटा, हम आगे बढ़ेंगे, राइट। जैसे मान लो टॉपिक आएगा मिनरल पोटेंशियल ऑफ पर्टिकुलर क्रटन, ठीक है, मिनरल पोटेंशियल ऑफ धरवार कटन। धरवार कटन जब पढ़ूंगा तो उसके हिसाब से डिस्कस करूंगा कि धरवार कटन का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे मान लो हमेशा मैप आपके पास रखना, सपोज दिस इज द कर्नाटका एरिया, सपोज दिस इज ईस्टर्न धरवार कटन, मोस्ट ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ओनली, मोस्ट ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट। इसको WTC और वेस्टर्न धरवार कटन को सेपरेट किया करता है, क्लोज सेपरेट ग्रेनाइट, ठीक है, सेपरेट करता है। इसका इंपोर्टेंस भी हम देखेंगे आगे जाके जब धरवार कटन डिस्कशन करेंगे एंड मिनरल पोटेंशियल। जस्ट अभी जिस बता रहा हूँ याद रखना, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट सम ऑफ द डिपॉजिट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, बट अगले वीडियो के पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल पे, ठीक है। उसका होस्ट रॉक क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। जैसे मान लो धरवार का हुट्टी गोल्ड फील्ड हो गया, हुट्टी गोल्ड फील्ड, ओके, मोस्ट ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट विथ ग्रीनस्टोन बेल्ट, एसोसिएट विद द ग्रीनस्टोन बेल्ट, है ना, सिस्ट बेल्ट। ये ग्रीनस्टोन क्या होता है? ग्रीनस्टोन, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द ग्रीनस्टोन? ग्रीनस्टोन इज अ अल्ट्रामैफिक बॉडी, राइट, ultramafic body where highest number of volcanic activity taking place, right? So this is all about the greenstone, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो मान लो चित्रदुर्ग, सपोज दिस इज द मेटलोजेनेसिस, कैसे पढ़ेंगे? चित्रदुर्ग बेल्ट हो गया, मान लो चित्रदुर्ग सिस्ट बेल्ट, राइट, चित्रदुर्ग सिस्ट बेल्ट हो गया। कहाँ कहाँ मिलता है? दिस इज ऑल अबाउट द लोकेलिटी। बेलरी हो गया, राइट,
एंड स्टेट इज कर्नाटका. व्हाट इज द होस्ट रॉक ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, जैसे मान लो मेटापिलेट हो गया, मेटावोल्केनिक्स, राइट, मेटासेडिमेंट हो गया. एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि ऑल दोस cratonic block, older cratonic typically, older cratonic block is associated with the BIF deposit and porphyry copper. हमेशा याद रखना, all those older cratonic block जो होता है mostly associated with the BIF deposit. BIF is mostly found in the older cratonic block. ठीक है, BIF एंड porphyry copper deposit. ठीक है. एंड अगर इंडिया के बात किया जाए, ठीक है, मोस्ट ऑफ द डिपोजिट फ्रॉम द इंडियन पेनिनसुलर रीजन, राइट, इंडियन पेनिनसुलर रीजन, ठीक है. जैसे मान लो डेक्कन ड्राफ्ट हो गया, ठीक है, जैसे मान लो डेक्कन ड्राफ्ट हो गया, आगे डिस्कस करेंगे, राइट. सो जैसे मान लो डेक्कन ड्राफ्ट इज अ, सपोज डेक्कन ड्राफ्ट को हम आगे देखेंगे, डेक्कन ड्राफ्ट को मैप पे व्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. ऑल दोस मेटावोल्केनिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन दैट क्राटोनिक ब्लॉक एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, राइट, विल सी. जैसे मान लो पर्टिकुलर बाबाउदन एरिया को देखोगे, ठीक है, बाबाउदन को देखोगे, सो इट इज BIF होस्टेड डिपोजिट, मेटावोल्केनिक और मेटाबिलाइट. सो होस्ट इज दिस पार्ट, दिस इज द होस्ट फॉर द बाबाउदन. अगर चित्रदुर्ग की बात करोगे तो मेटावोल्केनिक, सम ऑफ द ऑरिफरस क्वार्ट्ज बेसिन इज आल्सो देयर, राइट, एसोसिएटेड विद द लोड गोल्ड डिपोजिट, right. So this is all about Kutimaske silt belt and Ramgiri cyst belt, ठीक है, रामगिरी. तो इसमें समरी क्या हो गया, जैसे गोल्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द, आई विल राइट, ओके, जैसे रामगिरी सिस्ट बेल्ट हो गया, राइट, याद रखना, ठीक है, रामगिरी सिस्ट बेल्ट प्रोड्यूस लॉट ऑफ गोल्ड, नॉट लॉट ऑफ, प्रोड्यूस गोल्ड, ठीक है. रामगिरी हो गया, कुटीमस्की सिस्ट बेल्ट हो गया, कुटीमस्की सिस्ट बेल्ट, दिस इज सिस्ट बेल्ट, राइट, ठीक है. और क्या पढ़े, देर आर ऑल्सो, देर इज टाइप, कार्लियन टाइप भी है, कार्लियन टाइप गोल्ड डिपोजिट, ठीक है. इट इज नथिंग बट सेडिमेंट होस्टेड, राइट, सेडिमेंट होस्टेड गोल्ड डिपोजिट. दैट सेडिमेंट होस्ट द गोल्ड, राइट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है. एंड माइनर अकरेंस भी अगर देखोगे ना, माइनर अकरेंस कहाँ पे मिलता है, माइनर अकरेंस ऑफ गोल्ड डिपोजिट, माइनर अकरेंस ऑफ गोल्ड डिपोजिट अगर देखोगे तो आपको मिलेगा कि बुंदेलखंड क्रैटन, राइट, बुंदेलखंड, ठीक है, सिंहभूम क्रैटन, जैसे कुछ एरिया है, ठीक है, सिंहभूम क्रैटन. इट इज ऑल्सो राइट मेटामॉर्फिक ग्रीनस्टोन बेल्ट है ना, मेटामॉर्फोज्ड ग्रीनस्टोन बेल्ट, ठीक है. बस्तर पे भी माइनर अकरेंस है, बस्तर पटन देयर इज सोनाखान बेल्ट, राइट, सोनाखान बेल्ट, right. It is also one of the important part, Basarghat. So this is overall, right, important part, overall. बाकी सब यहाँ पे है, you can go through it, right. नुकी हिली बेल्ट पे भी मिलता है कुछ डिपोजिट, बट मेजॉरिटी जो क्वेश्चन आता है वो टीम्स के सिस्ट बेल्ट हो गया, गदग सिस्ट बेल्ट हो गया, चित्रदुर्गा सिस्ट बेल्ट हो गया, ठीक.
एंड इसका होस्ट याद रखना कि दैट पर्टिकुलर मेटावॉल्केनिक्स और मे बी ऑरिफरस क्वार्ट्ज पेन दैट होस्टेड द गोल्ड डिपॉजिट, ठीक है। एंड ऑल दिस फॉर्मेशन, जब बताया ना कि कौन सा फॉर्मेशन पे मिलता है और व्हाट इज द होस्ट रॉक फॉर दैट फॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल ओवर द गोल्ड डिपॉजिट एंड मोस्ट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट इज द लोड गोल्ड, ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट इज द लोड गोल्ड, लोड टाइप गोल्ड डिपॉजिट। इट इज मोस्टली इन द आर्कियन ग्रानाइट, ग्रीनस्टोन बेल्ट, ग्रीनस्टोन टाइप में ज्यादा लोड गोल्ड टाइप दिखाता है, राइट। एग्जाम्पल इज द ऊटी, राइट। एंड सम ऑफ द डिपॉजिट इज फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑल्सो, मेजोरिटी ऑफ द गोल्ड डिपॉजिट फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट, बट वेस्टर्न पार्ट पे भी मिलता है, वेस्टर्न दरबार गठन पे भी मिलता है, राइट। गोल्ड डिपॉजिट जैसे मान लो रामगिरी बेल्ट हो गया, इट इज कर्नाटक एंड आंध्रा बॉर्डर, राइट। वायनाड बेल्ट, इट इज केरला, राइट। सम ऑफ द डिपॉजिट एंड द झारखंड ऑल्सो देयर। सो मोस्ट ऑफ द झारखंड अभी बताया कि इट इज द मेटामॉर्फोज्ड limestone belts of meta sediments that hosted the gold or carbonaceous phyllite or phyllite that host the gold deposit, ठीक है। एंड वायनाड बेल्ट जो केरला पे है, दैट इज ऑल ओवर द ग्रानुलाइट एम्फिबोलाइट, मेटामॉर्फिक बेल्ट, ग्रानुलाइट, ओके, हाई पीटी बेल्ट, राइट। So it is most of the seared, right, seared granulite, okay, mostly granulite terrain पे मिलता है, ठीक। एंड सम ऑफ द आंध्र प्रदेश, ये एग्जांपल है, ये होस्ट रॉक है, ये होस्ट रॉक है, ये which formation that contained the gold deposit, which formation, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि always study or always make notes स्ट्रैटिग्राफी एंड इकोनॉमिक्स साइमल्टेनियसली। जैसे इंडिया मैप ड्रॉ कर दिए, ठीक है, जैसे इंडिया मैप ड्रॉ कर दिए, फिर क्राटन दिखा लिया, सपोज दिस इज द सिंहभूम क्राटन, ठीक है, सिंहभूम क्राटन हो गया। कहाँ कहाँ डिपॉजिट है, सपोज दिस इज राखा और राखा कॉपर बेल्ट, राखा कॉपर माइंस, ठीक है, हो गया, जदूड़ा हो गया, यूरेनियम माइंस, ये दिखाना मैप पे, सो दैट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द जेएसआई मेंस। आपका राइटिंग भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, राइटिंग भी, और यू कैन रिकॉल द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जैसे मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया, कि एमएसक्यू क्वेश्चन भी आ गया, कि सपोज मान लो मैं पूछ लूंगा कि जोनागिरी फॉर्मेशन, ठीक है, it is associated with the granodiorite metamorphism, whether it is true or false। MSQ 2-3 पॉइंट दे दिया, फिर पूछूंगा कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, राइट। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिजर्व, ठीक है, आई विल डिस्कस, डोंट वरी, जब हम डिटेल पे इकोनॉमिक जियोलॉजी क्लास डिस्कस करेंगे और डिस्कस, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज इज कैटेगराइज्ड इनटू द मेटालिक डिपॉजिट और नॉन मेटालिक डिपॉजिट, ठीक है, बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे मान लो मेटालिक मिनरल हो गया, Fe, CuAu, ठीक है, सो दिस इज द मेटालिक मिनरल, ठीक है। So this is metallic mineral resources. This produce the metal. Okay. And metallic mineral भी ferrous भी है, non-ferrous भी metallic mineral है। Ferrous refers to iron. All those minerals which have iron content are ferrous, such as iron, Fe. And those who don't have iron content, that is called the non-ferrous. जैसे Cu हो गया, aluminium हो गया, gold हो गया, PBZN हो गया, right? So this is non-ferrous, right? Which have the iron content is called the ferrous. Which have non-iron content, that is called the non-ferrous part, ठीक है। Non-metallic mineral are organic, जैसे मान लो fossil fuel हो गया, coal,
which are derived from the buried animal. ठीक है, mineral fuel which derived from the buried animal, and plant life such as coal and petroleum. Other type of non-metallic mineral are inorganic. Some of the deposit which is really not organic in nature, that is inorganic, ठीक है, such as mica हो गया, limestone हो गया, graphite हो गया, right? We'll discuss. So this is all over the geological map of India. Geological map of India. Okay. इसके हिसाब से देखोगे कि कौन सा फॉर्मेशन क्या है, right? So this is all about the sedimentary and age. This is age, and this is formation. Whether the particular formation is sedimentary in nature or origin from the igneous origin or metamorphic origin, right? All of the free graben deposit is like mostly metamorphic in nature. There is got metamorphosed, ठीक है, all those free graben, ठीक है. इस मान लो BIF हो गया, BIF and most of the porphyry copper deposit, that is age हो गया free graben, mostly area covered with the free graben age, ठीक है. And if you look at the Deccan Trough, right? This part is the Deccan Trough. Okay, इसको अगर देखोगे, so Deccan Trough is the amalgamation of Dharwar and Bastarapata, ठीक है कि नहीं बताओ? So it is the amalgamation of the Dharwar pattern and Bastarapata, ठीक है. इसीलिए all those type of metavolcanics is found in the Dharwar, all those metavolcanics, metapillite, right? All those formation is associated with the Dharwar, and almost metavolcanics is mainly host for the gold deposit. Okay, ठीक है. बस्तर भी हम डिस्कस करेंगे. एंड हमेशा याद रखना, बोला पहले कि मोस्ट ऑफ द गोल्ड डिपोजिट एसोसिएटेड विद द ईस्टर्न दरबार पैटर्न मोस्टली, बट उस वेस्टर्न दरबार पैटर्न पे भी मिलता है, ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द gold deposit is associated with the eastern Dharwar pattern. Why? Because most of the schist belt is there, na? Schist belt is there in the eastern Dharwar pattern. So eastern Dharwar pattern पे ज़्यादा schist belt मिलता है, and most of the gold deposit associated with the schist belt, जैसे चित्रदुर्गा schist belt हो गया, Ramgiri schist belt, Putimaski schist belt, right? All those from the eastern part, and all those metamorphosed sequences there. Volcanosedimentary, that is VMS deposit, is associated with the gold deposit, right? VMS जो volcanic massive sulfide deposit हो गया, it is associated with the volcanosedimentary sequence which is occurred in the older greenstone belt. Older greenstone, जो भी मैं लिख रहा हूँ please make notes, and if you don't understand please write in the comment box, or maybe you can write a mail, or maybe drop a message in WhatsApp maybe. So I'll be definitely call back and make sure you'll understand properly. Okay, so let's go to the next. And this is all about the generalized geological map of India, जो डिस्कस होता है. ये एज हो गया, कौन से एरिया का किस टाइप का एज. सो दिस इज द इंडेक्स बेसिकली. कॉलर दिया हुआ है, दिस इज कॉलर एंड एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर एज. ब्लू कलर इज एसोसिएटेड विद द मेसोजिक, राइट? सो दिस इज द मेसोजिक पार्ट, मेसोजिक साइनोजिक एरिया, राइट? एंड इफ यू geomorphologically divide the India into basically three part: peninsular India, extra peninsular and Indo-Gangetic, ठीक है. ये आप लोग को पता होगा, ठीक है. and all those type of arcan is associated with the metamorphic volcanosedimentary sequences, ठीक है. exposed rock unit from the arcan metamorphic granite to the youngest quaternary alluvium, ठीक है. and geologically metallogenic history similar to mineralogical cell area
all those type of deposit is correlated with the worldwide deposit. ठीक है, this is silt area from the Antarctic, Australia, South Africa, right? So worldwide deposit इतना ज़्यादा importance नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट इन इंटरव्यू यू कैन गेट सच। इन इंटरव्यू आपको कहीं एक दो क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट इज द रीजन, मे बी रिसेंट न्यूज और मे बी व्हाट इज द MAU that is signed from the India side for the policy making perspective, right? What are the different type of mineral policy or like mineral laws is taking place or is going on right now, and what are the different type of MOU signed with other countries for the mineral development जो भी है। तो ये इंटरव्यू में कई बार पूछ सकते हैं, बट अदरवाइज एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक दो बार मे बी यू कैन गेट 1-2 क्वेश्चन, बट ऑलमोस्ट इंडिया के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया पे पर्टिकुलर फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए बोलता हूँ स्ट्रैटिग्राफी, इकोनॉमिक जियोलॉजी हमेशा साइमल्टेनियसली पढ़ना। जैसे मान लो कि रामगिरी फॉर्मेशन, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिस इज एसोसिएटेड विद व्हिच टाइप ऑफ ओर डिपॉजिट, right? Ore deposit. So that is most important part. So which are the different type of agency that involved in the exploration of the mineral? जैसे मान लो GSI is Geological Survey of India. It is associated with the exploration, prospecting and survey. ठीक है, different scale से करते हैं। ठीक है, mine development is not mine development and recognition permit, all those पार्ट कवर्ड इन द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। माइंस जो डेवलप होता है IBM ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है, बट बिफोर दैट, बिफोर माइनिंग डेवलपमेंट इन द डिफरेंट स्केल, डिफरेंट स्मॉल स्केल्स टू लार्ज स्केल सर्वे, राइट, एक्सप्लोरेशन अप टू माइन डेवलपमेंट, whether the area particularly geologically improve or not, geologically significant or not, so that we can get a huge amount of reserve। suppose मान लो PBZ reserve मिल सकता है, so that is the part of the IBM, but almost GSI taking place, most of the work is taking place by the GSI। ONGC is for particular oil and gas, and one more agency is Oil India Limited is taking place for the oil and gas। It is also important oil part के लिए। MECL Mineral Exploration Corporation Limited, it is also a mineral agency for the particular development of the metallic, non-metallic, coal पे भी explore करता है। And NMDC typically iron ore, National Mineral Development Corporation, Bharat Gold Mines, BCML in Karnataka, right, Hindustan Copper Limited, and there are several type of private entities also जो participate कर रहे हैं for the mineral growth of India, for the mineral exploration, ठीक है। and from the Department of Mining and Geology in the state जो डायरेक्टरेट ऑफ माइनिंग होते हैं DGM, स्टेट DGM जो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस और डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजी जो होता है, तो वो भी पार्टिसिपेट करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट और एक्सप्लोरेशन, ठीक है। एंड सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे, देयर आर ब्रॉडली 3 मेजर बेल्ट इन इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट एंड ईस्टर्न वेस्टर्न बेल्ट वो छोड़ दो, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्लेट्यू, मेजॉरिटी ऑफ द रीजन इज द नॉर्थ ईस्टर्न, दैट इज छोटनागपुर, झारखंड, ये नॉर्थ ईस्ट पे आ जाता है, बट इसको ईस्टर्न बेल्ट बोलते हैं, ईस्टर्न साइड, राइट। छोटनागपुर, झारखंड, उड़ीसा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, दिस इज कवर्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। साउथ वेस्ट में भी आता है कर्नाटका, गोवा, सो एंड नॉर्थ वेस्ट अरावली रास्ता, मोस्टली अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट हो गया, ठीक है, गुजरात, सो इट इज कवर्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न। गुजरात इज नोन फॉर द पेट्रोलियम डिपॉजिट, oil and gas deposit, ठीक है। there are lot of oil gas deposit in the Assam, I'll discuss, ठीक, don't worry।
Coal, there is two types of coal field: Gondwana coal field, tertiary coal field. So majority of the coal deposited from the Gondwana side. Gondwana coal field का भी जो coal mines है in Gondwana, right? तो significance क्या है? Significance क्या है? Coal type क्या है? Mostly bituminous type, right? 99% of the coal reserve है iron from this field. The coal is free from the physical and chemical significance क्या है? Free from moisture and contains phosphorus and sulfur. Okay, the carbon content in Gondwana is less compared to the carboniferous coal. You can just read it. Whenever I will discuss about coal, different type of coal, how it is formed, where it is formed, right? I will discuss. It is the basic significance, physical, chemical properties, proximate analysis, ultimate analysis, lab analysis. जब discuss करेंगे and I'll discuss the different type of numerical. Then I will discuss about the coal. But overall, you can go through it or make note. Okay, what is the age of the tertiary coal field? What is the age of the Gondwana coal field? So this is most important. Okay. So lignite normally Tamil Nadu, Rajasthan, right? Rajasthan ka Bikaner area, Varmar area. So this is all about the lignite type. Bikaner is some of the Meghalaya, right? Jammu Kashmir, Gujarat, Kutch. It is associated with the lignite deposit. And first coal mine 1774 in the Ranigan first one of that is why taken place the huge role. Coal is formed due to the compression plant material. You know how it is formed, but I will definitely discuss about the coal geology. जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है please drop email or drop comment ताकि मैं at least आपको समझा सकता हूँ, ठीक है? Through phone call, through telephonic call, or maybe through the video call, right? Or whatever possible way, I will definitely do it. So coal therefore found variety of form depending on the degree of compression. The amount of compression take plays a huge role for the formation of the coal or different type of coal. ठीक है? ये just याद रखना. So this is the fact base or fact database question. This is not something that is you can get in the maybe GSA or you can get in the जैसे मान लो इंडिविजुअल PSU का एग्जाम हो रहा है, जैसे ऑयल हो गया, सेल हो गया, तो वहाँ पे डाटाबेस क्वेश्चन आ सकता है कि कितना एरिया पे टोटल लैंड एरिया कितना है, हाइड्रोजन में से कितना है, राइट? So how much is the map in different scale? How much is the economic potential area? 96% exclusive economic zone, that is EEZ, right? I will discuss. What do you mean by exclusive economic zone? कितना ये पे mineral resources में मिलता है, right? How much area multi-sensor geography survey is going on right now, and how is the